Good evening, everyone. I am Deep Gandhi, moderator of this VCM. We are delighted to welcome you all in the VCM being organized by Continuing Professional Education Committee of ICAI. It is my pleasure to be a moderator for this session of VCM on Inspection, Search and Seizure under GST and Overview of Foreign Contribution Regulation Act 2012. In a short while, we will start this VCM. I would like to appreciate you about the CPE committee. The profession of chartered accountants has been always been recognized for quality of education, training, and short grip over technical standards. With globalization and increased good evening, everyone. It is essential that chartered accountants equip themselves with changes occurring and stand out to the expectations of the society. Our institute is constantly working and contributing to cater to the needs and requirements of our members and has taken various initiatives for them from time to time in this direction. With this view, the Continuing Professional Education CP Committee of ICA has always been the foremost to provide opportunities to their members to boost their knowledge base. The program for this evening is as follows. We have two sessions of 1 hour each and topic are as follows. First, inspection, search and seizure under GST. Second, overview of Foreign Contribution Regulation Act 2010 and recent amendments. Our eminent speaker will talk about above mentioned two emerging areas of professional interest. Before that, I would like to provide a short profile of our Vice Chairman and Chairman. Deep. Yes. Vice Chairman's profile we will not talk about. My profile also is not required. Oh, okay, sir. I will now address and then I'll request Dr. Ayush to speak. Okay, sir. Mr. Deep and Hinaji, wherever required, you can intervene. And Mr. Yes, just give me a statistics of number of members enrolled and number of members now live now. Mr. Yes. Can you tell me now? Good evening, friends. Welcome to this weekly webinar, which we do on every Friday by Committee on Economic and Commercial Law and Economic Advisory. Thank you, yes. We are 1,500 members on this webinar, Ved Saab and Dr. Ayush. So this venture has really resulted into spreading the awareness. And Saturday we have a webinar by Continuing Professional Education Committee. Starting 25th April, there will be a webinar every day. Like the first 4 days, there are 8 webinars we have made on FEMA, starting with 25th, Monday to Thursday. And then in the month of May, 2nd to 5th, and Friday and Saturday, we have a regular webinar. Now, I want each of these 1,500 members to become a moderator like Deep Gandhi from Ahmedabad, or become a speaker like Dr. Ayush Saraf and Mr. Ved Mittal, or write a book like on the backside of my photo, you see the books all written by me. And the institute gives 500 rupees per page. So if you write 200 pages, you will get 1 lakh. We will get 1 lakh. The writer will get. And any of these activity, I consider that as a visa or as a passport, because we can contact regulators, we can contact experts in the field. We will buy the books, because we do any activity when there is a purpose, there is a mission. Because when I talked to Dr. Ayush, I said, take a subject which can give us 10 times the income than we do GST compliance. So when there is a search notice, or there is a notice, where a person is going to be arrested, the person will sell out any kind of money there. Similarly, the Foreign Contribution Regulation Act has a very wide implication of deregistration. And, when I did the work, I was not knowing. I charged only 1 lakh for
FCRA registration. There are, people are ready to give 5 lakhs, 7.5 lakhs. So these are the subjects which are very simple to learn. So any expert, whoever is an expert, Ved Saab or Dr. Ayush or myself, we were beginner on the day one. By practice, we have learned the subject. So we have unlimited time. Committee has unlimited time to mentor each one of you on your passionate subject, your passionate areas. And you write to us, we will be very eager to assist you to develop a global practice or a national practice, especially in a non-traditional area, because in traditional area, there are each one of us we can do. And in economics, we rate 3 kinds of market: perfect market, monopolistic market, and monopoly market. I consider 4 areas: accounting, auditing, direct tax, and normal GST compliance as a perfect market. We will get cost plus a nominal margin. In monopolistic, there are few suppliers and many service receivers. In monopoly, there are, one suppliers like the FCRA. When I want to know the FCRA experts, I will not get more than 10 names across the country. And similarly, the GST complex matters, handling the search, handling arrest. So please look, we have put on our website 20 global areas and 50 non-traditional areas. So enjoy the sessions and earn a lot of money, because money is very important. Professionals or anyone, for any activity, we need money, and render a very good service. Over to you, Dr. Ayush Saraf. He is very learned, the doctor. The 2 commonality between him and me is the DR word. So I want each 1500 of you, Ved साहब आप भी PhD करो, क्योंकि बिना MBBS किए डॉक्टर लिखने में एक खुशी होती है. Over to you, Dr. Ayush. Thank you so much, sir. Sir, you have very rightly said that litigation is the future, because compliances are a thing of the past now. And as we are all witnessing that slowly and slowly government is automizing things, and the compliances are fading away. So audits, they have shrunk over the days when the limits for tax audits have been increased, and there are many other provisions, beneficial provisions for the SSCs. And similarly, in GST also, compliances will slowly and slowly fade away. Now we are having some income from GST return filing, annual returns, though 9C has been taken off, but still annual returns are largely being filed by chartered accountants. But sir, slowly, when things will be automized and everything will be through computers and through return filings, through automatic data entry from e-invoicing and from e-way bills and those things, then compliance portions will be very less, and they will be automatically done by the tally software or the ERP software or the accountants of the clients. So our requirement will be specialized at that point of time. Our requirement will be to save the client where they commit the mistakes. So litigation is the future. And Rajkumar sir has very rightly said that this is the area where the future lies for us. Because to practice in litigation, you need an experience of 5 to 10 years. So start your practice now in litigation, so that down the line, when these things are reduced, when the compliances are reduced, we are left with a very good background for our litigation practice. So starting with the topic of the day, let me share the slide. Yes. So today's topic is inspection, search and seizure under the GST law. Inspection and search and seizure, they are covered by sections 67 to section 72 of the CGST Act. However,
the main sections which we will be discussing today are section 67, 68, rule 139. The other sections we shall also be discussing, but we shall go through them in a very short manner, because these are the two sections in which we need to discuss. We need to identify the loopholes. We need to understand as to where we are going wrong, how we can save our clients, what are the rights of our clients, what are our rights, and how we can make a difference, because this is the era of marketing. You need to show your client that you are saving him in some manner. So if during an inspection, search or seizure, we go and we make a difference for them, we don't need to do anything illegal. We need to make him aware of his rights. Once we are able to do that, I think we shall be very diligently fulfilling our duties. So let us go through these provisions. These are the provisions. We will not go through them now. I have prepared a FAQ format because these are very bulky provisions, and reading out these provisions will not be very useful in this format where we are not looking at each other. Okay. And if anyone has any queries, they may put it in the chat box. I think chat box is on for queries. Gandhiji? Yes, sir. Chat box is on, no? Actually, there are two separate portals, one for participant and other for speakers. So Okay. they are, in last 15 minutes, we will take up the questions. Okay, no issue, no issue, no issue. So, yes, what I have done, I have formulated these the section 67 into a FAQ format, so that it is easy for you to understand these provisions. After this FAQ, we shall go to the main provision, and then we shall discuss them. Now, there are three words in this section, section 67: inspection, search, and seizure. The first word, inspection. Let us understand what is inspection, when can it be done, and what can be done under inspection. What is inspection and who can authorize inspection? Inspection means going to the premises of business premises of any taxable person and inspecting, only looking, only observing, only identifying. Okay, only inspection. Mark my words, only inspection. Section 67 subsection 1 covers inspection, and under inspection there can be no seizure. There can be only inspection. He can only look. Yes, he can take copies, but he cannot seize. Who can authorize an inspection? Any officer of the rank of Joint Commissioner or above. An officer of the rank of Joint Commissioner of Central Tax or State Tax and above may authorize any officer subordinate to him to conduct an inspection, search or seizure. Now, when can it be initiated? If the JC and above has reasons to believe. So this reason to believe is a very subjective term, and it has been subjected to huge litigation in the past, and still it is subjected to litigation. The Honorable Supreme Court has given many landmark judgments in this topic, and by and large, the Honorable Court has held that reason to believe, when this responsibility is being cast on a Joint Commissioner, on the officer of the rank of a Joint Commissioner, and he has been said that you grant this inspection only when you have reason to believe, then it is a very responsible task on his part. And it should not be basically just an apprehension. The reason to believe should be covered by tangible evidence at his hand. And he should be 100% confident that yes, something is there. Just because nowadays what is happening, hit and run cases are happening more, because they just have some apprehension that maybe yes, this person is hiding something. Let's go there, let's inspect there, and let's find out there what is happening.
They don't have any tangible evidence in their hands in some cases. And this is where the intent of the law gets defeated. Because this language reason to believe is being twisted in any manner. So if the JC and above has reasons to believe that a taxable person, sir, the language used here is taxable person. How does the law define a taxable person? A person who is registered under this act or who is liable to be registered under this act. That means both registered and unregistered persons can be inspected. Okay, even a person who is not registered, he also can be inspected under this provision. When the taxable person has suppressed any transaction relating to supply of goods or services or both. What do we mean by suppression? This suppression word is very important. Suppression means hiding something. Suppression means hiding something. Okay, let us see the definition. I think we have a definition of suppression. Section 74 defines suppression. Okay, we shall discuss this word suppression. Suppression, in simple word, you can take that suppression means hiding something or understatement of any information. Okay, so if the taxable person suppresses any transaction relating to supply of goods or services, so what can be the cases under this head? Suppose a person is he's a registered person and he's regularly cancelling his e-way bills. He's creating an e-way bill, and within 24 hours or 48 hours, he's cancelling the e-way bill. And this is a regular feature. So when the authorities get the statistics that in this particular month, this person has cancelled these many e-way bills. So that gives a reasonable presumption and a reason to believe that maybe this person is suppressing transactions relating to supply of goods or services. Because this might happen that he's doing some kacha sales and he's cancelling his e-way bills. So that might be a reasonable presumption for initiating inspection. Now, there might be one more case. Suppose the authorities are conducting scrutiny of or the authorities are conducting inspection of some other person, and in that other person's premise they found the bill of your client, the bills issued by your clients, but they are not reflecting in his 2A since the last 3-4 months. Okay, they are not reflecting in your 2A for the last 3-4 months. So can that be a presumption that your client is also hiding or suppressing any transaction? Now that again is a subjective issue. The suppression, whether it is suppression or not, that will depend on a case-to-case basis, and there lies the issue and there lies the litigation behind this word reason to believe. Next, if JC and above has reasons to believe that the taxable person has suppressed stock of goods in hand. Now, how will the authorities know that whether he has suppressed stock of goods in hand? Suppose they are purchasing some kacha goods. They are purchasing goods without bill and it has been intercepted. And the truck owner has said that these goods are going to this person. I think this is a very valid presumption that there is some suppression, because if this transaction is happening, there might be many other transactions which he has done. So there might be some stock of goods in hand in the hands of the taxable person, which has not been declared or shown by him in his returns. Has claimed ITC in excess of his entitlement under this act. Prior to January, it was difficult, but after January, it is very easy for the authorities, because they will simply compare GSTR 3B and 2B, and they will have a reason to believe. Though there might be cases
that I am claiming some ITC which were unclaimed in the earlier months. But this functionality is not yet enabled in the system, which is a must requirement, because otherwise these issues will create, these transactions will create issues and people will be harassed. Has indulged in contravention of any of the provisions of this act or rules made thereunder. Has indulged in contravention of any of the provisions of this act or the rules made thereunder. So this is a very, very, very wide power. Let me give you an example. There is a provision in GST Act which says that every registered person has to display his GST number in a prominent place in his premises so that it is visible to everyone. Now, if this GST number is not displayed prominently, can it be a reason for inspection? See, again, there are two sides to it. If the officer has some other information with him that yes, this person is not declaring his sales nicely, and if the officer has sufficient reason to believe that this GST number is not mentioned to evade sales, so that people doesn't come to know that he is a registered person and he's dealing through he's entitled to collect GST. So that might be a presumption, but again, that varies on case-to-case basis. Now, non-filing of GSTR 3B and GSTR 1, can that be a reason for inspection? I think if the non-filing is happening for more than 3 months and the officer has tried his best without inspection that the returns get filed by sending him notices under GSTR 3A, and even if the same is not happening, then I think he has a reasonable presumption that there is some evasion, tax evasion going on. However, if the officer does that without any due diligence on his part, without trying from his part, without contacting the person, without sending him any notice, I think then it is unjustified. Though the powers are very wide and the departmental officers can take it to any extent, it is at their will. Next, the departmental officers have sent many notices and they are not responding. The taxable person is not responding. Can that be a reason for inspection? Yes, very well. Why didn't you respond? The officers gave you the opportunity. But now when it has not been responded, the officer has no other option but to inspect your premises as to why you are not responding. So I think that is a very valid reason for inspection. Now, all these suppression of transactions, suppression of goods in stock in goods, claimed ITC and contravention, they are to be done with an intent to evade tax. So if there is any suppression of transaction, it is to evade tax. If there is suppression of goods in stock, it is very apparent that it will be to evade tax. So it is very easy for the authorities to prove that these are with an intent to evade tax. Next condition, any person engaged in the business of transporting goods or an owner or operator of warehouse or any other place is keeping goods which have escaped payment of tax. Suppose what happens that a taxable person is purchasing goods without bills, and he asks his transporter that I cannot keep goods at my premises because I may be inspected at any time, but you do one thing, keep it in your premises. So if the authorities come to know that goods are hidden there or goods may be there, so the authorities are under every right to inspect the premises of that transporter or warehouse keeper. And the last condition, he has kept his accounts or goods in such manner as is likely to cause evasion of tax. Okay. So evasion of tax is that means mens rea has to be present. The law says that there has been some contravention with an intent to evade tax. So procedural lapses cannot be
a cause for inspection. But again, that is a very subjective issue, and the authorities are not so wisely using these sections, because these sections are being used very now and then, every now and then, and in many cases there are very serious procedural lapses on the part of the departments. So these things we should keep in mind, and when any officer comes to the premises of our client and inspects or proposes to inspect the premises, we should always keep these provisions in mind so that we can at least know what is happening. Yes, we should allow them if they have proper documents, but we should also have our own checks and balances. Okay, so now let us read this provision. Now it will be easy for us. This provision says that any taxable person suppressed any transaction relating has intelligent contravention or the rule thereunder to evade tax under this act. Okay, now if you read this entire provision, it will be very easy for you, because we have broken that section, this section in this FAQ, and then we are discussing it. Okay, since we have paucity of time, I shall go to the next question now. What is the procedure to allow inspection? JC can allow inspection if he has reasons to believe in GST INS1, and he can authorize any officer to conduct the inspection. So GST INS1 has to be accompanied by the inspecting team, and signatures of the taxable person has to be taken in this INS1, that yes, I have received it. Otherwise, the procedure of inspection will be void. Which premises may be inspected? Any place of business. The section says, uses the word any places of business. Now, what is place of business? To include any godown or any other place where a taxable person stores his goods, maintains his books of accounts, and place of agent. So what happens if the books of accounts are stored at his chartered accountant's place? Can it be inspected? Definitely yes. If the person gives a statement that my books of accounts are not at my place, after audit they were there at the chartered accountant's place itself, so that place becomes the place of business of that person, and the authorities can very well inspect that place of business. But the taxable person has to give a statement. Without statement, they cannot go there, because then it cannot become a place of business. Mere presumption cannot become a place of business. Residence, again the same thing, because under section 67 subsection 1, inspection provisions, premises or residential premises cannot be inspected. Only place of business can be inspected. However, if it falls under the provision of places of business, then it can be inspected. Can the premises of an unregistered person be inspected or searched under this provision? Yes, sir, because the word taxable person is used. So unregistered persons are also covered here, who are liable to pay tax but are not paying. Okay, so these were the inspection provisions of section 67 subsection 1. Now let us go to section 67 subsection 2, which covers search and seizure. When can search and seizure be initiated? Again, the power is given to JC and above, either pursuant to inspection or otherwise. That means the officer goes for inspection under 67 subsection 1. There he observes certain things, and he believes that he requires some penetrative powers now, because he finds something fishy. So he contacts his JC, requests him to convert the inspection into a search and to send him another INS1. So the JC will then authorize him to convert the inspection into a search by sending him another INS1. So this is a first case under which search can be initiated. But there is one more language given here, either pursuant to an inspection or otherwise. That means there might be some other conditions also. Has reasons to believe, again there has to be a reason to believe that
any goods liable to confiscation. Okay, the officer has presumption to believe that goods are liable to confiscation. When are goods liable to confiscation? Section 130 subsection 1 says that if supply is made in contravention of any of the provisions of GST law with intent to evade tax, if goods are not accounted for, and if goods liable to tax are supplied without having been applied for registration. So these three are the conditions under which goods are liable for confiscation. If supply is made in contravention of GST law, if goods are not accounted for properly, if goods liable to tax are supplied without applying for registration. That is, he should have taken registration, but he has not applied for any registration. Okay. So the first condition is any goods liable to confiscation, and the second condition is any document or book of things which he thinks that it shall be useful in any proceedings, and they are secreted in any place. So this word secreted in any place is of paramount importance to conduct any search or to authorize any search. Goods liable to confiscation, they should be secreted. Documents or books or things, they should be secreted. That means hiding. That means hidden. Now, there are many case laws. We will be discussing the relevance of this word secreted and how authorities can use this word secreted and how we should understand this word secreted. Okay, now let us understand the differences between search and seizure. Inspection and search. Inspection is verification. Search is unearthing of goods liable for confiscation or books. Power, only inspection. No coercive actions can be taken. However, under search, coercive actions can be taken. Area, under inspection, only place of business can be inspected. However, under search, any place of business can be inspected. Any place, not any place of business, any place can be inspected. And inspection, under inspection, there can be no seizure, and under search, there can be seizure. So these are the basic differences between inspection and search. And inspection is a very soft provision, actually. And search is a hard provision, and these are normally options of the last resort. However, these days, these are the options of the first resort, what we are practically witnessing. And this is causing undue harassment to taxpayers, and things which could have been sorted out by a simple notice, they are being made subject matter of inspections and search seizures. Can residence of a taxable person be searched under section 67 subsection 2? Yes, because the word used is any person, any place. So residence can also be searched. However, there has to be an authorization under INS 01. Now let us understand the word secreted. Secreted, I'll give you an example. Suppose some officers, the departmental officers, comes to the premises of our clients, and they say that you have secreted your books of accounts and you have not mentioned all the transactions in your books of accounts. So, and you are maintaining some other documents also which we have not declared to the department. So we are conducting your search. But then we say them that no, sir, see, our books of accounts is this. Yes, these are not declared in our GSTR 1. We have missed it. But see, it is there. We have not secreted it. But the departmental officers say that, see, you have also hidden some stock. You have some extra stock which has been secreted. But then our client says, no, sir, see, it is lying there. We have not secreted it. It is in front of you. Secreted means hiding. I have not hidden it. It is in front of you. So how can you say that it is secreted? Sir, your search is void ab initio because I have not secreted anything. The things are in front of you and they are not secreted. They are at the registered place of business. The place of business is declared in my GST registration.
So can we take this contention of the SSC as correct? In my humble opinion, no. And the Honorable Apex Court in Durga Prasad in 1965 itself has read that the word secreted means document which are not kept in the normal or usual place. Okay, so it means in the normal context that documents which are not kept in the usual place, but it also means that which are likely to be secreted. That means there is an intention of the SSC to hide it from the authorities. So the stock which is extra and the transactions which are not declared in GSTR 1 or GSTR 3 of the earlier months, they were likely to be secreted by the SSC. So the word secreted means secreted, hidden, or likely to be hidden. So we cannot take the plea that no, these are not secreted, these are in front of you, so your search is invalid. The search is very well valid, sir, because the word likely to be secreted has to be interpreted here. Now, powers of officers under inspection, only inspect, not seize. Okay, powers of officers under search. What are the powers? To seal or break open the door of any premises. Suppose there is a room, storeroom in our premises, and we say that, sir, see, the storeroom is locked. So how can you open it? I don't have the keys. My staff has the keys. Under inspection, he cannot do anything. Under search, he can break it or he can seal it. He can break it or he can seal it. Okay, you don't have the keys, we'll break it. To break open any almirah, electronic devices, box, receptacle, in which any goods, accounts or registers or any other documents are concealed. However, this can be done only when access is denied. The officer should not be very whimsical that without asking he breaks it. He should first give the person the opportunity to open it. If he denies it, then the breaking thing should happen. And all these things should happen in the presence of two honorable people of the locality. However, how much this is happening, we don't know in practical scenario. Because as soon as the search team comes, the person starts shaking and he does whatever the team says. So how much these provisions are being followed, this cannot be discussed now. Whether the person from whose custody any documents are seized is entitled, yes. If some documents or books of accounts are seized by the authorities under a search, they can very well be sought by the taxable person if he requires, and a copy should be given to him. However, if the officer feels, if the authorities feel that this could prejudicially affect the investigation and they have reasons to believe that, I think they cannot be allowed. And the law empowers the authorities to deny the documents, the copies of the documents. Release of seized goods. Now, there can be two situations: at the instance of the taxpayer by giving a bond or furnishing a security as might be sought by the authorities. Okay, they will give the quantum and manner is entrusted upon the officers. So they will decide as to how much security is required or what type of bond is required, and according to that it can be paid and it can be released. However, there is another provision which says that suppose if today a search is conducted and even after 6 months no notice is issued or no action is taken, then the goods have to be released. However, it can be extended to another 6 months if there is sufficient cause. So we all know there is always a sufficient cause. So you can practically take that there are 12 months, and after 12 months, the goods have to be released if no action is taken, no notice or no SCN is issued. Okay. Next, what is the procedure for conducting search? So this is a provision. Actually, what happens when search is conducted, the provisions of CRPC also gets entangled. So
every search has to be conducted as per the provisions of CRPC. But practically what we are witnessing is that the entire procedure is not being followed. And things are being done under the guise of threats, basically. So what is the procedure? Search warrant. Search warrant in our case will be INS 01. Lady officer should be accompanied if a residence is to be searched. So a lady officer should invariably accompany the officers if the residence of a person is being searched. The search warrant should be executed before the start of the search. It cannot be presented in the middle. As soon as they reach there, the search warrant has to be presented, and it should be signed by the taxable person along with 2 witnesses. The search has to be made in the presence of at least 2 independent witnesses. The officers should ask the taxable person to search them, that please search us, whether we have anything objectionable with us which can be dangerous for you or which can implicate you. But how much that is being followed, again, we don't know. A panchnama. After the search, there are many documents which are seized. So a panchnama or a mahazar is prepared, wherein the list of all the documents seized is mentioned, and it is also a copy of that is also given to the SSC or the taxable person. Now, there are certain issues during search. Can violence be, can the path of violence be adopted in search? The law doesn't allow it, but the practice allows it because it is being done in some places. What we are hearing that yes, there are some minor violence which is being adopted. Threats are being given that yes, we shall arrest you, because see, businessman is afraid of getting arrested, and as soon as he said that you will be arrested, he surrenders before him. Even if he is not at fault, he signs everything which is given, presented before him. So we should be very vigilant about that one. There can be no place for violence under these provisions. So next, can accounts, so search provisions are complete here, but there is another provision which gives the officers the power to seize the goods even without a search. Now what happens, suppose we are being called by the officers to bring books of accounts at the department. We take the books of accounts to the departmental officer. He checks it. He says that no, I think that this is required by me, and I will seize the document and I will keep it with me. I will give you when I am done with these documents. When I don't require it, I'll give it to you. Now I believe that you are attempting to evade tax. So I will seize these accounts. So section 67 subsection 11 gives this power to the proper officer. So the goods can be seized by him if he believes that any person is evading tax, evading the payment of taxes. Can goods be purchased? So what happens, sometimes the departmental officers have an apprehension that this person is making sales without issuing bills. So what they will do, they will take an authorization from the proper officer, and they will go to the premises, the registered premises of the person. They will ask for goods without bills. They will pay him the money and they will take the goods, and then they will start a search. So this provision, section 67 subsection 12, gives them the power to purchase goods from the premises of the registered person by paying cash, and after purchase, the registered person has to return back the
cash to the authorities and take back the goods. And then the proceedings will follow as it should follow. But this gives them the proof that yes, this person is indulging in selling goods without issuing bills. So these are the provisions basically relating to search and inspection. Now let us come to the provisions. This is section 67 subsection 1, which covers provisions relating to inspection. Okay. Section 67(2), which covers provisions relating to search, which says that where the proper officer not below JC, either pursuant to an inspection carried out under subsection 1 or otherwise has reasons to believe that any goods liable to confiscation, which in his opinion are secreted in any place. Okay. So this word secreted has to be proven. Hello, sir. Sorry to interrupt. It's 4:45. So if it is possible to conclude this session within 5-10 minutes. I'll conclude in 5 So minutes. there are various questions from the participants. I'll conclude in 5 minutes. Sorry to interrupt. Sure. Okay. So these are the, now since there is paucity of time, we shall not be discussing these provisions in details. Let us go through it. This is this rule 139(1). Section 68(1), inspection of goods in movement. This is an enabling provision for inspecting goods, trucks and vehicles. Basically, every consignment, as we know, has to be covered by an invoice, and if it is above 50,000, then by e-way bill. So this provision gives authority to the officers to inspect any such vehicles, and if they consider that yes, it is a fit case, then they can detain it under section 129. So inspection can be done under section 68 subsection 1 of any vehicle. Power to arrest. When the commissioner has reason to believe that any person, it is given, any person has committed any offense stipulated under section 132, then the power to arrest is there with the authorities. Now, what are the powers to arrest? These are the powers to arrest. I will give the slides. These are in a very simple manner. Let me just mention one thing, that basically arrest can be made only when the tax evaded or ITC wrongly availed exceeds 5 crore. The basic tax, that is excluding interest and penalty, exceeds 5 crore. Those cases are non-bailable. Below 5 crore, all cases are bailable. That means the person has a right to bail. He has to be released immediately by the officer who is arresting. Next, summon. Summon is a power which is been given to the authorities to call the persons, to call the taxable person, to call any person whose attendance he considers necessary, and the provisions of CPC gets invoked. These are judicial provisions. But the problem is that these are again options of the last resort. Because what is happening, authorities are calling directly the CEO or MD of any organization, which can be done even by his accounts officer, but they're calling the CEO. So the Supreme Court, Honorable Supreme Court, and many other courts have also said that please call the managerial persons at the end when there is no other option left. First, exhaust all your other options, and power to summon should not be used again and again. It should be used only in a very limited manner. But again, how much this is being followed, I don't know. Section 71. One power to inspect is under section 67. There is another power to inspect that is under section 71. Under section 71 also inspection can be done. But let me tell you, section 67, what I believe, is an investigative provision. Section 71 is an administrative provision where the officer can inspect the premises to
complete their administrative works. Suppose an audit is being conducted by a chartered accountant under section 66. He wants to inspect the premises of the registered person. So under these provisions, he can go there and he can see the business, the billing pattern, and he can understand the business. So these are not investigative provisions again, but these are used by the authorities as an investigative provision also. So as and when the clarity comes from the court, then these things will be sorted out. However, for the time being, we have to bear with it, and we understand that the authorities should use these provisions in a very delicate manner, because what happens whenever a person is inspected, a fear psychosis is created that you write whatever we tell you, you pay the tax as we are saying you pay this. Okay, see, your tax is exceeding 5 crores, so you can be arrested. Do one thing, immediately make a payment of 5 crores. Or if you cannot, in some cases, we have heard that even post-dated checks are being sought. But that is defeating the provision of the Act. The law never perceived these things to happen. However, this is happening, and we have no other option but to be vigilant and to fight for the rights of our SSCs, of honest taxpayers, though we have no intention to save the culprits and the wrongdoers. Thank you. Deepji, now you can proceed for the question Yes, answers. I will take the question and answers. There are various questions. First, power of authority to inspect the places of business at the time of registration of GST. Can you What are the repeat? powers? What are the powers of the officer for inspecting the place of business at the time of registration? At the time of registration, he can only go there and see whether the premises is there or not. Only that is his thing. He can ask what type of business they are doing. No other power. Okay. It is a very simple power. Okay. Just they have to ascertain whether the place of business exists there or not. Okay. Differentiation of procedure of search and seizure in Income Tax Act and GST Act. See, Income Tax Act and GST Act. Income Tax Act is a very well arranged and well organized act where section 132 deals with search, seizure, and these things, and under GST Act, section 67 subsection 2 deals with search, seizure. Income tax and GST, ideally they are having some differences, but see, again, if you see search, you can search anything under income tax, you can search anything under GST Act also. So the powers are wide. However, the difference, what I feel, is of uniformity. The income tax law is a very old law, and it is established law with a very good amount of jurisprudence, and the language of the Income Tax Act of section 132 is very nicely drafted, and it has less ambiguities as compared to the GST law. But the powers are by and large the same under the GST law and the income tax law, as I can perceive. Okay, there is one question. Can a registered person demand the reason to believe before proceeding for inspection? And it is compulsory to share the reason. Sir, it is compulsory to share the reason. Sir, I'll do one thing. I'll show the INS1 format. Okay, yes. I think that will clear the doubts of everyone. Just a second. Let me share INS1. Yes. So this is INS1. It says here the name of the taxable person will be mentioned. Here, whereas information has been presented before me and I have reasons to believe that Messrs. ABC has, now what they do, they just put a tick in any of these heads. Okay. They just put the 4 or 5 transactions which we discussed in our presentation. These are those transactions only. They don't mention the exact problem or the exact transaction. Okay. But they will tick in any of these one, and they will conduct their search. And I think at the time of search,
maybe they will not give the exact reason to you, because that might prejudicially affect their investigation. Maybe later on they may share. You are not audible. You are mute. Hello. Yes. Yes. In normal circumstances, the GST officer calls to the registered person and says that I would like to see your books of account. I will come to your places of business. So there is any power to the officer or not? So that's what I said, that the power is given only under section 67 subsection 1 or section 67 subsection 2 for inspection. Yes. And it has to be covered by INS 01. And INS 01 can be authorized only by an officer to the level of joint commissioner and above. However, yes, the question which the honorable member has raised is a very valid question, because what I have said, that practically many things are happening which should not have happened. And these types of calls are coming, and these types of illegal inspections are happening all around the country. So as and when any inspecting team arrives at your office, ask them to sit down, offer them some water, and respectfully ask them, sir, please show me your INS 01. If they cannot show, you can deny them access to your premises. Yes, I understand within half an hour they'll bring INS 01. But at least they will understand that they cannot take you lightly. There is one another question. How to ensure that notices, summons, warrants are not issued to the non-executive directors? Can we appoint some officer as officer in default for GST compliance? Sir, in company, there is a provision for appointing officer in default. So Okay. it can very well be appointed. However, the problem is that, as I said, that Income Tax Act is a very settled law. And in GST law, there are multiple agencies, and there is a lack of synchronization between these agencies. So what can you do if notice is issued to your non-executive directors? You cannot do anything. Though it should not be issued, I understand. But in some cases, they're taking the printout from the master data. They're fetching the records from the master data, and they're issuing notices to all. And again, there is no provision in the GST law. There are some provisions for officers in default, but these are not being followed basically. So if you can defend yourself in that case, I think you have every right that my officer in default will represent before the authorities. And there is another one question. Can the search and seizure procedure be allowed to be audio video recorded by taxpayer? Yes, why not? Why not? If at the time of seizure, see, when the search party enters, then they will not allow anything. Yes. They will not tell, they can record it, but they will not allow you to record it. Can taxpayer record it? That's what I'm saying. The officers can record it. Okay. The authorities can record it. They may not allow, because at that time you are at their mercy. You have to act according to them. Yes, at the time of seizure of goods, if you say, sir, I want to video record my seized goods, that is within my rights, that I have given to you in a good condition, and these are the goods, I want to video record it. I want to video record the documents which I have given to you. So I think that is a valid thing to ask from the authorities, and that can be sought. However, the entire proceeding to be video recorded, that depends on how merciful the officer is. Because if you video record it, there cannot be any dhamki. Yes, sir. Thank you, sir, for a very wonderful session. I would like to request CA Ved Mittal, sir, for proceeding with second session.
Thank you so much. Thank you very much, and thank you for the Rajkumar Adukia ji, chairman of this committee, and Hansraj Chugh ji, and other our office all bearer given this opportunity. The topic assigned to me really at present this time FCRA. Now I start our television. Hello, Ji. The today topic is FCRA, Foreign Contribution Regulation Act. This is the picture of the present scenario of all FCRA registration. This is the data provided on the FCRA side. एक्टिव आज की डेट में जो भी अपने रजिस्ट्रेशन है, आप हम ये देखते हैं 16,900 प्रेजेंट देयर आर टू एक्टिव रजिस्ट्रेशन. कैंसिल है 20,775 एंड एक्सपायर्ड और विदहेल्ड है 12,514. मींस 50,000 टोटल रजिस्ट्रेशन में हम देखते हैं कि 16,900 एक्टिव रजिस्ट्रेशन है. मींस एटलीस्ट 34% रजिस्टर्ड हैं, बाकी या तो गवर्नमेंट ने कैंसिल किए हुए हैं या गवर्नमेंट ने विदहेल्ड किए हुए हैं. तो नटसेल में हम यही कह सकते हैं कि जो आज की डेट में रजिस्ट्रेशन है, एफसीआरए रजिस्ट्रेशन, एफसीआरए एक्ट बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है. और अगर किसी भी तरह से कोई भी, या तो हमने रजिस्ट्रेशन में कुछ प्रॉब्लम है या हमने अपने एनुअल रिटर्न नहीं फाइल किए हुए हैं विद इन टाइम, तो एफसीआरए ने जो भी कंप्लायंस यदि पूरे नहीं किए हुए हैं तो 100 कॉस्ट नोटिस देके वो हमारे रजिस्ट्रेशन आज की डेट में कैंसिल भी हो रहे हैं. अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन. फॉरेन कंट्रीब्यूशन में द डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफर मेड बाय एनी फॉरेन सोर्सेस. बेसिकली क्या होता है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन है, ये एफसीआरए की फॉर्मेलिटी है, वो किन किन लोगों के लिए एप्लीकेबिलिटी है. तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमें पैसा आ रहा है, चाहे वो डोनेशन हो, चाहे वो डिलीवरी हो, चाहे वो ट्रांसफर हो, वो एनी फॉरेन सोर्सेस से आएगा. यदि फॉरेन सोर्सेस से नहीं आ रहा तो वो एफसीआरए में कैटेगरी में नहीं आते हैं. क्या क्या आता है? ऑफ एनी आर्टिकल्स और आर्टिकल गिवन टू ए पर्सन एज ए गिफ्ट और एज पर्सनल, एनी currency or any security as defined by the act section 2 of the security regulation act. यदि ये तीनों चीज मेरे पास में आ रही है, मींस यदि कोई आर्टिकल आ रहा है जिसमें वो पर्सनल नेचर का नहीं है, कोई करेंसी किसी ने दी है या कोई सिक्योरिटी डिफाइन की हुई है, यदि किसी भी फॉरेन सोर्सेज से मेरे पास में आ रही है तो इट इज कवर अंडर द एफसीआरए. अब इसमें कौन कौन सी चीज शामिल नहीं है देखते हैं. एनी अमाउंट रिसीव बाय ए पर्सन और ए फॉरेन सोर्सेज इन इंडिया बाय वे ऑफ फीस इंक्लूडिंग चार्ज बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया फ्रॉम द फॉरेन स्टूडेंट. यदि कोई फॉरेन स्टूडेंट इंडिया में पढ़ रहा है और वो अपनी वो फीस पे कर रहा है तो इट इज नॉट कवर अंडर एफसीआरए. सेकंड, toward the cost of in lieu of the goods and service rendered by a such person in ordinary course of business. यदि ordinary course of business में यदि कोई गुड्स या सर्विस प्रोवाइडेड की है और उसके अगेंस्ट में कोई पेमेंट आ रहा है, दिस इज आल्सो नॉट कवर अंडर एफसीआरए. देन और या कोई ऐसा अमाउंट जो उसके एजेंट के द्वारा रिसीव हुआ हो, तो मींस नटसेल में हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई डोनेशन, डिलीवरी या कोई अमाउंट जो फॉरेन सोर्सेस से आ रहा है, यदि मेरा कोई वो कॉमर्शियल नेचर में है, जैसे मैंने कोई सर्विस प्रोवाइडेड की है, मैंने गुड्स उसको दिया हुआ है, उसके रेंडर्ड में मैं कोई पैसा ले रहा हूं, तो दीज आर नॉट कवर अंडर द एफसीआरए. Who can receive the foreign contribution? Foreign contribution कौन रिसीव कर सकता है? Any person can receive the foreign contribution subject to the following condition.
It must be a defined culture, economic, education, religious, or social program. It must obtain the FCRA registration, prior permission from the central government, or it must not be prohibited under section 3 of the FCRA Act. एक्चुअल में क्या है कि वैसे तो कोई भी पर्सन अगर इंडिविजुअल भी है, HUF भी है या NPO भी है, कोई भी रिसीव कर सकता है, लेकिन सब्जेक्ट टू जो रिसीव कर सकते हैं उन्होंने कंडीशन दी है। यदि मेरा कोई NGO है तो NGO डेफिनेटली कल्चर में होना चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी में होना चाहिए, एजुकेशनल होना चाहिए, रिलीजियस और सोशल प्रोग्राम में होना चाहिए, और कुछ उन्होंने सेक्शन 3 में रेस्ट्रिक्टेड पर्सन लगाए हुए हैं, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी है या अदर्स रेस्ट्रिक्टेड पर्सन की लिस्ट है। तो ये लिस्ट में 20% कैन नॉट रिसीव द FCRA कंट्रीब्यूशन। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉरेन सोर्सेज। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि यदि मेरे पास में फॉरेन सोर्सेज से अगर कोई इंडियन करेंसी भी आ रही है तो भी इट इज कवर्ड अंडर FCRA। द कंट्रीब्यूशन रिसीव फ्रॉम ऑल नॉन इंडियन पासपोर्ट होल्डर, इस बात पे ध्यान करेंगे, नॉट इंडियन पासपोर्ट होल्डर मींस यदि कोई पर्सन जो बाहर रह रहा है उसके पास में इंडियन पासपोर्ट है और उससे मुझे कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव हो रहा है तो दैट अमाउंट इज नॉट कवर अंडर FCRA। इसमें क्या क्या चीज कवर है? द गवर्नमेंट ऑफ एनी फॉरेन कंट्री या टेरिटरीज ऑफ एजेंट ऑफ द दिस गवर्नमेंट, एनी इंटरनेशनल एजेंसी, एनी फॉरेन कंपनी, एनी कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड फॉरेन कंट्री और टेरिटरी और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। ये सारी लिस्ट उन्होंने दी हुई है जो फॉरेन सोर्सेस को डिफाइन करती है। Who are the eligible criteria to grant the registration? अब आता है कि अगर मैं जनरली जो FCRA के रजिस्ट्रेशन लेते हैं वो जनरली NPO लेते हैं। NPO में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होते हैं, या तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एंड 1860 है, या इंडियन ट्रस्ट एक्ट में कोई ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, या बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट में है, या कोई स्टेट गवर्नमेंट के कुछ स्टेट एक्ट होते हैं जहाँ ट्रस्ट रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे बॉम्बे में बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट है, या दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में जो ट्रस्ट रजिस्टर्ड होते हैं वो 1882 में रजिस्टर्ड होते हैं, या सेक्शन 25 कंपनीज, या नाउ सेक्शन 8 कंपनी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये तीनों तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हैं, इन्हीं लोगों को जनरली FCRA का रजिस्ट्रेशन मिलता है। नॉर्मली बीन एग्जिस्टेंस एटलीस्ट 3 ईयर, कम से कम इनका जो NGO जो ऊपर दिए हुए हैं उनका कम से कम 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। टू बिकम एलिजिबल मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 15 लाख स्पेंड ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर, मींस इनका जो एक्सपेंसेस, इनका जो NGO में जो पैसा है या जो उन्होंने अपने मेन ऑब्जेक्टिव के लिए पैसा खर्च किया हुआ है, कम से कम 15 लाख रुपए की इन्होंने खर्चा किया हो 3 साल में। तो ये उनके क्राइटेरिया है कि 3 साल पुराना ट्रस्ट होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि क्या मेरे पास में 3 साल पुराना ट्रस्ट नहीं है और मैं FCRA का रजिस्ट्रेशन लेना चाहता हूँ। अब इसमें 2 तरह के रजिस्ट्रेशन होते हैं। एक तो रजिस्ट्रेशन होता है जिससे जो हमें 5 साल के लिए मिलता है, एक होता है प्रायर परमिशन। प्रायर परमिशन के केस में क्या रहता है कि जैसे सपोज मेरा कोई NGO है और उसको एक पर्टिकुलर कोई प्रोजेक्ट करना है इंडिया में, तो उसके लिए 3 साल की लिमिट काउंट नहीं होती है। और पर्टिकुलर जो प्रायर परमिशन के लिए मिलता है वो किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही मिलता है। उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म होने के बाद में वो आपका रजिस्ट्रेशन खुद ही खत्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि FCRA में कौन कौन से फॉर्म भरे जाते हैं। FC1 इंटीमेशन टू रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ गिफ्ट आर्टिकल सिक्योरिटी बाय ए कैंडिडेट फॉर इलेक्शंस। FC2 applicability for FCRA hospitality. FC3A application for the FCRA registration. 3B application for the FCRA prior permission. FC3C application for renewal of FCRA registration. FC4 intimation annual return. FC6A intimation change name and address with the state of the association. 6B intimation change nature, aim and objective of the registration. 6C intimation change designated bank. 6D intimation additional utilization bank account. 6E change of original key person. ये सारे के सारे फॉर्म जो है ऑनलाइन अवेलेबल है। FCRA.online की जो इनकी साइट है वहाँ ये सारे फॉर्म अवेलेबल है।
ये तो अभी आपने बात की कि कौन कौन से फॉर्म हमें FCRA में एप्लीकेबल होते हैं। अब मैं बात करता हूं कि मुझे FCRA का रजिस्ट्रेशन कराना है, FCRA का रजिस्ट्रेशन लेना है, तो मुझे किन किन बातों का कौन कौन से फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें जो भी हम फॉर्म लगाएंगे सारे ऑनलाइन लगाएंगे, और ऑनलाइन लगाने के साथ में सबको PDF में हम कन्वर्ट करेंगे। PDF में भी कन्वर्ट करने के बाद में इन्होंने हर एक का साइज दे रखा है। यदि जब मैं अपने फॉर्म को अपलोड करूंगा FCRA रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इन्होंने साइज भी दे रखा है। यदि मेरा साइज ज्यादा आ रहा है तो उसको कंप्रेस्ड हम करना चाहिए। यदि मेरा साइज ज्यादा आ रहा है तो मेरा फॉर्म अपलोड नहीं होगा। अब मुझे कौन कौन से फॉर्म को अपलोड करना है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ एसोसिएशन मींस यदि मेरा कंपनी है, सेक्शन 8 की कंपनी है, तो ROC से मेरे पास में एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आया होगा। यदि मेरी सोसाइटी है तो सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आया होगा। और मेरा यदि ट्रस्ट है तो ट्रस्ट के केस में जनरली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं आता है। जो ट्रस्ट डीड है उसकी बैक साइड में ही अपना उसको उसकी कॉपी लगा देते हैं, तो वही अपने आप में ट्रस्ट के केस में सर्टिफिकेट माना जाता है। मेमोरेंडम और एसोसिएशन और ट्रस्ट डीड, यदि मेरी कंपनी है तो मेमोरेंडम, सोसाइटी है तो बाईलॉज, और ट्रस्ट है तो ट्रस्ट डीड। एक्टिविटी रिपोर्ट ऑफ द लास्ट 3 ईयर मीन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि 2 तरह के रजिस्ट्रेशन अप्लाइड होते हैं, प्रायर परमिशन और जनरली दूसरे को हम बोलते हैं नॉर्मल, जो 5 साल के लिए मिलता है। FCRA का रजिस्ट्रेशन इसमें 5 साल के लिए मिलता है। अब वैसे तो इनकम टैक्स में भी 5 साल का हो गया है, तो इन्होंने जो इनकम टैक्स में जो लिया हुआ है वो FCRA से लिया है। एक्टिविटी रिपोर्ट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, यदि मैं फर्स्ट टाइम फाइल कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं मानता हूँ मेरा ट्रस्ट या NPO मेरा 3 साल पुराना होगा, जैसे कि रिक्वायरमेंट है। तो मैंने पिछले 3 सालों में क्या क्या एक्टिविटी की है उसका एक राइटअप 2-3 पेज का हमें बनाना पड़ता है। ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, नो डाउट इसकी 3 साल के जैसे रिक्वायरमेंट है, तो 3 साल की मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, रिसीव पेमेंट और अपने शेड्यूल्स। एसोसिएशन हैज अपलोड एफिडेविट ऑफ ईच फंक्शनरी। अब इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है कि जो हमारे चीफ की फंक्शनरीज हैं, जैसे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, या अपने जो कमेटी में जो मेंबर हैं जिनको हमने कुछ ना कुछ दायित्व दिया हुआ है, ये सारे चीफ की फंक्शनरी कहलाएंगे। तो इनका एक एफिडेविट उन्होंने 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे एक एफिडेविट फाइल करना पड़ता है, और उसमें उन्होंने जनरली लैंग्वेज लिखी हुई है कि मैं इस ट्रस्ट से रिलेटेड हूँ, मेरा किसी भी तरह की कोई क्रिमिनल लायबिलिटी, इस तरह का एक उन्होंने एफिडेविट मांगा है। वो एफिडेविट नोटराइज करा के हमें उसको ईच की फंक्शनरी का फाइल करना है। चीफ फंक्शनरी सिग्नेचर, अब इसमें क्या होता है, जैसे एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन को, चाहे वो सेक्रेटरी हो, चाहे वो ट्रेजरर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट, हम उसको चीफ फंक्शनरी ऑफिसर डिसाइड कर लेते हैं। उसके अपने सिग्नेचर एक उस प्लेन पेपर पे सिग्नेचर करके उसकी PDF फाइल में हम उसको कन्वर्ट करके रख लेते हैं। साइज भी इन्होंने दिया हुआ है। सील ऑफ द एसोसिएशन, जो हमारी सील है उसको भी एक प्लेन पेपर पे लगाएंगे, उसका फिर PDF में कन्वर्ट करके उसका भी एक स्क्रीनशॉट लेके ये भी हमें फाइल करनी है। इसके अलावा और क्या क्या चीज की जरूरत है जब हमें रजिस्ट्रेशन लेने पड़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट डिटेल ऑफ द एसोसिएशन ऑफ सच एज एड्रेस, जो अपने पर्सन्स हैं उसका एड्रेस क्या है, उसका मेल ID क्या है, और अपना ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट है तो वेबसाइट क्या है, फोन नंबर क्या है, एक्सेट्रा। कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ चीफ फंक्शनरीज सच एज मोबाइल नंबर और उसकी मेल ID। रजिस्ट्रेशन डिटेल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा ऑर्गेनाइजर है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, पैन नंबर क्या है। लिस्ट ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव हमारे क्या है। डिटेल ऑफ की फंक्शनरी, if the association have any parents or sister or subsidiary organization जैसे भी होती हैं, अगर है तो उसका नंबर क्या है। if the organization has submitted any application, यदि कोई हमने पहले कोई एप्लीकेशन फाइल की हुई है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, मींस एप्लीकेशन नंबर क्या है। if the association has received any foreign contribution without prior approval of the central government or detail, वैसे तो लॉ ये कहता है कि जब तक आपके पास में फॉरेन कंट्रीब्यूशन FCRA का रजिस्ट्रेशन नहीं आ जाता आप सिंगल पेमेंट भी रिसीव नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी केसों में क्या होता है कि पहले ही होता था, अब तो कर हो ही नहीं सकता,
क्योंकि अब तो जैसा कि हम जानते हैं कि अब इन्होंने FCRA के केस में सारे के सारे बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पार्लियामेंट स्ट्रीट में इन्होंने शिफ्ट कर दिए हैं। तो जो भी पैसा आएगा वो पहले SBI के अकाउंट में ही आएगा। तो पहले क्या होता था, ये पहले मींस जब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जब अकाउंट नहीं होते थे तो किसी भी बैंक में पहले FCRA का पैसा आ सकता था, तो आ भी जाता था। तो इन्होंने इसलिए लिखा हुआ है कि एनी, अगर आपने FCRA के रजिस्ट्रेशन से पहले यदि आपके पास में कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया है उसकी भी डिटेल देनी है। डिटेल ऑफ डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट, नो डाउट अब हमें केवल SBI में ही खुलवाना है। अब यह क्वेश्चन आता है क्या मेरा SBI के अलावा दूसरा बैंक अकाउंट हो सकता है? आंसर इज यस, लेकिन जो मेरा फॉरेन कंट्रीब्यूशन आएगा वो केवल SBI में ही आएगा। SBI के बाद में उसको यूटिलाइज करने के लिए मैं दूसरा बैंक अकाउंट FCRA का भी खोल सकता हूँ। डिटेल ऑफ यूटिलाइजेशन बैंक अकाउंट, जैसे मैंने अभी बताया आपको, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ऑक्यूपेशन ऑफ द ट्रस्टी, whether any functionary is convicted by offense, किसी तरह का कोई offense है, any history और FCRA registration, और मेरा NGO दर्पण में ID कंपल्सरी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट मुझे किसी FCRA रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे चाहिए है। मैं सबसे पहले, अब इसको फाइल कैसे करते हैं, मैं सबसे पहले अपनी एक NGO का लॉगिन ID बनाऊंगा FCRA की साइट पे, fcraonline.gov.in पर। उसमें पहले मैं फोन नंबर और मेल ID डालने के बाद OTP आएगा। OTP आने के बाद मैं उस पर रजिस्टर्ड हो जाऊंगा। रजिस्टर्ड करने के बाद में फिर मैं जो मेरा रिलेवेंट फॉर्म है वो फॉर्म को फिलअप करूंगा, और फिलअप करने के बाद जो भी मेरे डॉक्यूमेंट हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट में PDF में कन्वर्ट करके साइज को देखते हुए एक एक फॉर्म को मैं उसमें अटैच करता जाऊंगा। अटैच करने के बाद में वी विल सबमिट द फॉर्म। तो ये तो मेरा हो गया कि मुझे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या करना है। ये जो भी मैं बता रहा हूँ सारे में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बता रहा हूँ, इसके देखते हुए वी कैन फाइल। अब क्या होता है, फाइल करने के बाद में क्या होता है कि कम से कम अब आज की डेट में जो आ रहे हैं वो कम से कम 1-1, 2-2 साल का टाइम लग रहा है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। लेकिन उसके लिए जैसे मैं फाइल करूंगा, फाइल करने के बाद में विद इन 3 मंथ और 6 मंथ एक उस मेरी NGO के रजिस्ट्रेशन के लिए लोकल इंटेलिजेंस के लिए ये पहले फीडबैक करते हैं, और लोकल इंटेलिजेंस के ऑफिसर भी NGO के पास में आते हैं फोन करके, साहब हमें आना है, आपसे डिस्कस करना है। तो डिस्कस करने के बाद पहले तो अपनी इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी करने के बाद में आप जो NGO के जो ऑफिस बियर की लिस्ट हमने दी है उनसे 1 to 1 मिलते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के बाद में वो अपनी रिपोर्ट फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है, उसको वो सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद में फिर ऑनलाइन ही अपने पास में कोई लेटर आता है कि आपको इस डेट में हमारे पास बुलाया जाता है। वो फिर दिल्ली के ऑफिस में बुलाते हैं, डिस्कस करते हैं, उसी के बाद ही वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं। तो मींस FCRA का रजिस्ट्रेशन पहले किसी टाइम में एक असेट हुआ करती थी। यदि आज की डेट में अगर मेरे पास में कोई FCRA की वर्किंग नहीं है, यदि मैं शौक में लेना चाह रहा हूं, तो इट इज एडवाइजेबल कि FCRA का रजिस्ट्रेशन केवल शौक में ना लें, जब तक वर्किंग ना हो तब तक अप्लाई ना करें। नहीं तो ये जो FCRA का रजिस्ट्रेशन मेरी असेट है, ये मेरी लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि FCRA के रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। यदि मेरा एनुअल रिटर्न टाइम से नहीं फाइल हुआ तो जो मेरा फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी यदि मेरा निल है तो कम से कम 1 लाख रुपए की पेनल्टी है इसके साथ। तो इस चीज का ध्यान में रखें कि जो भी यदि मुझे FCRA रजिस्ट्रेशन की जरूरत है तभी मुझे अप्लाई करना है, अदरवाइज शौक में मुझे अप्लाई करना है तो जो असेट है मेरी ये लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। Now the question is whether donation given by a non-resident Indian NRI is treated as a foreign contribution. Answer is no. जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, यदि कोई सिटीजन जिसके पास में इंडियन पासपोर्ट है, चाहे वो फॉरेन में रह रहा है, चाहे वो फॉरेन करेंसी में मुझे पैसा दे रहा है, फिर भी वो FCRA की कैटेगरी में नहीं आता है। FCRA की कैटेगरी में आएगा मेरा अगर फॉरेन सोर्सेस है और NRI पर्सन के से यदि मैंने कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन लिया हुआ है तो इट इज नॉट कवर अंडर फॉरेन सोर्सेस।
Contribution made by a citizen of India living in any another country, non-resident Indian, from his personal saving through the normal banking channel cannot be treated as a foreign contribution. However, while the accepting any donation from such NRI, it is advisable to obtain his passport detail to ascertain that she or he is a actually Indian citizen. अब ये इन्होंने कुछ चेंजेस किया हुआ है, मैं अब इसमें अभी इसमें सितंबर 2021 में इन्होंने कुछ चेंजेस किए थे। मैं चेंज के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा। दे पार्टिसिपेट एंड एक्टिव। अब इन्होंने क्या किया था कि जैसे हमने देखा कि कुछ दिनों से या कुछ टाइम से तरह तरह के कुछ आंदोलन इंडिया में हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं पॉलिटी मोटिवेटेड होते हैं। तो पहले क्या था कि जो पॉलिटिकल पार्टी थी, केवल पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, उन्हीं को ही प्रोविडेट था। इन्होंने कुछ चेंज किया कि यदि कोई एनजीओ या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो एक्टिव पॉलिटिक्स करती है, उसको भी इन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स की डेफिनेशन में कवर किया हुआ है। पहले जो स्पेंडिंग लिमिट थी 10 लाख की, उसको बढ़ा के 15 लाख कर दिया है। On the expiry of the validity of the FCRA registration, the organization neither receive। अब इन्होंने क्या किया हुआ है कि जब तक मेरे पास में FCRA का रिन्यूअल नहीं आ जाता है, मैं किसी भी तरह का पैसा बाहर से नहीं ले सकता और ना इसको यूटिलाइज कर सकता। पहले ये थे कि यदि आपने अप्लाई कर दिया है तो अप्लाई करते ही आपको वर्डन खत्म हो गया, आपके पास में जो पैसा है उसको आप यूज कर सकते थे। लेकिन अब इन्होंने इस पर थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी है। If application for the renewal is not received before the expiry of the date, the FCRA registration shall deemed to be seized and amount of the foreign contribution lying unutilized to FCRA account shall be vested to the prescribed authority। अगर मेरे पास में मेरा अपना FCRA का रजिस्ट्रेशन है, वो मेरा एक्सपायर हो गया, एक्सपायर होने के बाद में मैंने उसको रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं करा, तो जो मेरा FCRA में पैसा है वो मेरा गवर्नमेंट अथॉरिटी का पैसा हो जाता है। वो मुझे गवर्नमेंट अथॉरिटी को ट्रांसफर करना पड़ता है, जो अनयूटिलाइज्ड पैसा है। मैंडेटरी टू फर्निश डेटा ऑफ FCRA, जैसे मैंने कहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इन्होंने 31 मार्च की टाइम इन्होंने रखा था, ये 2022 कर दिया है। तो अब तक हमारा अकाउंट उसमें खुल जाना चाहिए था। वी होप शायद सबका खुल गया होगा, नहीं तो FCRA का रजिस्ट्रेशन जो रिटर्न है, अब तो रिटर्न में भी इन्होंने लास्ट ईयर जो रिटर्न जिसकी डेट 31 मार्च थी, उसमें भी इन्होंने मैंडेट कर दिया था कि आपको रिटर्न तभी जाएगी जब आपने SBI के अकाउंट नंबर उसमें लिख दिया हो। ये कुछ चेंजेस चलिए। अब हम देखते हैं कि अब इस साल का जो उन्होंने एनुअल रिटर्न था, एनुअल रिटर्न में इन्होंने काफी चीज को लिमिट कर दिया है। लिमिट क्या कर दिया है? मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा इसमें। ये कुछ चेंजेस थे जो मैं इसको थोड़ा सा आगे उसको डिस्कस करूंगा। अब जो ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैंने FCRA का रजिस्ट्रेशन ले लिया है, अब लेने के बाद में मुझे कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। डू और डू नॉट मिक्स फॉरेन कंट्रीब्यूशन विद द डोमेस्टिक रिसीप्ट। मींस यदि मेरा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मुझे फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए वी हैव टू मेंटेन ए सेपरेट बैंक अकाउंट, और जो भी मेरा खर्चा हो रहा है वो मुझे उसी बैंक अकाउंट से डायरेक्ट पैसा चेक काटना है। ऐसे में ऐसा नहीं कर सकता कि मुझे फॉरेन कंट्रीब्यूशन मेरा SBI में है, डोमेस्टिक बैंक अकाउंट मेरा सपोज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन का पैसा मींस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में पैसा ट्रांसफर करूं और उस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से मैं डायरेक्ट चेक दे दूं। इट इज नॉट एडवाइजेबल, और अभी होता भी नहीं है। मींस
जो भी पैसा खर्च करना है मुझे एफसीआरए का, वो मुझे एफसीआरए के अकाउंट से ही चेक काटना पड़ेगा। डू नॉट डेविएट द पर्पस ऑफ द ग्रांट, मीन जिस पर्पस के लिए आपके पास पैसा आया है उसी पर्पस के लिए आपको पैसा ही खर्च करना चाहिए। डू नॉट एनकरेज द कैश विड्रॉल। अब इन्होंने क्या कर दिया है कि जैसे कैश विड्रॉल की, कैश की जो लिमिट है वो 2000 रुपए फॉरेन उसके लिए की हुई है। मींस कि अब दूसरा सेक्शन इन्होंने ये भी कर दिया है कि जो इनकम टैक्स के हिसाब से 10,000 से ज्यादा का जो लिमिट है, मींस इनका पर्पस ये है कि कैश इकोनॉमी ना हो, मतलब कैशलेस इकोनॉमी हो। जो भी पैसा मुझे खर्च करना है तो इट इज एडवाइजेबल आप चेक के थ्रू या थ्रू बैंकिंग चैनल ही करें, कैश के खर्चों को अवॉइड करें। डू नॉट इन्वेस्टमेंट एफसी फंड इन म्यूचुअल फंड और स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट। जो पैसा मेरे पास में एफसीआरए का आया है वो पैसा मुझे एफसीआरए के पर्पस में यूज करना है। ऐसा नहीं है कि मैं उसको म्यूचुअल फंड या स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर दूं। डू नॉट एक्सेप्ट फॉरेन हॉस्पिटैलिटी व्हाइल विजिटिंग अब्रॉड, जनरल है। डू नॉट ट्रांसफर एफसी फंड टू एनी अदर एसोसिएशन। अब इन्होंने पिछली बार चेंज किया हुआ सितंबर में कि जो एफसीआरए का फंड जो मुझे रिसीव हो रहा है वो मुझे डायरेक्ट ही खर्च करना है। अब मैं किसी इंटरमीडिएट एजेंसी को हायर नहीं कर सकता कि जिसके थ्रू पहले एफसीआरए का पैसा खर्च होता था। नाउ इट इज नॉट एडवाइजेबल और ना ये करना चाहिए। अब जो भी पैसा खर्च होगा आपको डायरेक्ट ही पैसा खर्च करना है एफसीआरए। डू नॉट यूटिलाइज फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। पहले ये जो लिमिट थी वो 50% की थी एडमिन की, अब इन्होंने घटाकर 20% कर दी है कि जो भी मेरा एडमिन का पैसा है वो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डू नॉट एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन विदाउट प्रायर परमिशन और हैविंग अ सर्टिफिकेट ऑफ एफसीआरए। मींस यदि मेरे पास कोई एफसीआरए का पैसा आया है, यदि मेरे पास कोई प्रायर परमिशन भी नहीं है और मेरे पास एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, अगर बाई चांस आ गया है तो इट इज एडवाइजेबल कि उसको रिटर्न कर दें। यदि आपने रिटर्न नहीं किया हुआ है तो उसमें फिर एफएमआ के लॉ लग जाते हैं, जिसमें प्रिजमेंट, जिसमें जेल का भी एक प्रोविजंस है। डू नॉट रिसीव और यूटिलाइज फॉरेन कंट्रीब्यूशन इफ सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड इज सीज और नॉट रिन्यूअल्ड। मींस यदि मेरा किसी कारण से रजिस्ट्रेशन सीज हो गया है या मेरे पास रिन्यूअल नहीं आया है, तो जब तक मेरे पास में रिन्यूअल नहीं आ जाता मैं उस पैसे को खर्च नहीं कर सकता। डू नॉट एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द सस्पेंशन और एफसीआरए। अब जनरली क्या होता है कि किसी भी एनजीओस की कभी कभी कोई इंक्वायरी या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होती है एफसीआरए के पास में कि पैसे का मिसयूज कर रही है कोई एनजीओ, तो उसका एक टेम्परेरी फेसिस पर वो ये अपना उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंशन में डाल देते हैं और इंक्वायरी एक सेटअप हो जाती है। तो यहाँ क्या हुआ है कि जब तक आपकी इंक्वायरी चल रही है या सस्पेंशन है आपका सर्टिफिकेट, तो इट इज एडवाइजेबल कि आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन को उस दौरान रिसीव ना करें। डू नॉट एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन अनडिस्क्लोज बैंक अकाउंट। ऐसा ना हो कि आपने और दूसरा कोई बैंक अकाउंट खोल लिया है उसमें आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं, तो इट इज नॉट, ये नहीं करना चाहिए। तो इसमें स्टार्टिंग में मैंने लिखा डू और डू नॉट, ये काम हमें नहीं करना है। डू नॉट अवॉइड मैंडेटरी एफसीआर रजिस्ट्रेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मींस यदि मुझे एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के में जो मुझे रिटर्न फाइल करनी है, पर्टिकुलर एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, ये विद इन टाइम ही करनी है। यदि मैंने विद इन टाइम नहीं फाइल की तो उसमें पेनल्टी मिनिमम 1 लाख रुपीज है यदि आपकी नील आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, या 5% विच एवर इज मोर। नाउ द क्वेश्चन इज, can foreign contribution be received and utilized from the multiple bank account? The foreign contribution should be received only exclusive single FCRA account, which is in State Bank of India. Now the question is कि मैं यूटिलाइज के लिए मल्टीपल बैंक अकाउंट हो सकता हूं? आंसर इज यस, वी कैन यूज अनदर एफसीआरए अकाउंट ओनली फॉर यूटिलाइजेशन पर्पस। मेरा जो पैसा फॉरेन कंट्रीब्यूशन से आएगा वो केवल एसबीआई में आएगा, लेकिन मैं यूटिलाइज के लिए अदर से मल्टीपल बैंक अकाउंट खोल सकता हूं जिसके थ्रू मैं पैसा यूज करूंगा। और जो भी मैं, अगर मुझे बाई चांस खोलना भी है
तो फॉर्म नंबर 6D में मुझे इन्फॉर्म करना है विद इन 15 days ऑफ सच ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट। नाउ द कम टू फाइलिंग एनुअल रिटर्न। जैसा कि हम वी नो कि हर साल इसकी रिटर्न फाइल होती है, जो होती है विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर। मींस यदि मुझे 31 मार्च 2021 की रिटर्न फाइल करनी थी तो उसकी लास्ट डेट थी 31 दिसंबर 2021। मींस द एनुअल रिटर्न इज टू बी सबमिटेड ऑनलाइन। FCRA online.nic.in इज द साइट का नाम है। प्रेस्क्राइब फॉर्म FC4 ड्यूली अकम्पाइंड बाय द बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ रिसीव पेमेंट विच इज सर्टिफाइड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब इसकी जो एनुअल रिटर्न हम फाइल करते हैं, एनुअल रिटर्न में हमें क्या क्या पेपर लगाने हैं? एक तो बैलेंस शीट लगानी है, और रिसीव पेमेंट अमाउंट, रिसीव पेमेंट जो मुझे बनाना है वो मुझे फॉरेन कंट्रीब्यूशन का बनाना है, होल का नहीं बनाना। मीन जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन मुझे रिसीव हुआ है उसी का ही मुझे रिसीव पेमेंट बनाना है। बैलेंस शीट नो डाउट कंसोलिडेटेड होती है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इस बैलेंस शीट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन का अलग, टोटल का अलग। रिसीव पेमेंट जो मुझे फाइल करना है इसमें केवल फॉरेन कंट्रीब्यूशन करना है, होल का नहीं करना, which is certified by a CA. Submission of in return even if no receipt or utilization foreign contribution during the year, it is also mandatory. Means यदि आपके during the year आपके पास में नील रिटर्न, नील का मतलब है किसी भी तरह का कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं आया है, फिर भी आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है विद इन टाइम। यदि आपने नहीं फाइल की तो मिनिमम 1 लाख की पेनल्टी आपके पास में आएगी, और आती भी है। या आपने नहीं फाइल किया तो आफ्टर ए टाइम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है, और हुआ भी है काफी लोगों का। इट इज एडवाइजेबल, अगर आपकी ड्यूरिंग द ईयर नो अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड, तभी भी आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी और फाइल कर देना चाहिए। The consequence of the not file, impose penalty for the late submission 1 lakh rupees, cancel the registration, रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है, और प्रोसिक्यूशन फॉर द वायलेशन ऑफ द। जैसा हम देखते हैं कि FCRA में जो एक्ट हैं वो काफी टाइट एक्ट हैं, इतना इजी नहीं है, क्योंकि इसमें सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग दोनों लगती है और फेमा भी लगता है। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन के केस में किसी भी तरह की लीनियंसी नॉट अलाउड। कैन फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू बी इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड और अदर इन्वेस्टमेंट? ये तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन बैंक इसमें बनाए हुए हैं। आंसर इज नो। स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज हैज बीन डिफाइंड, ये उन्होंने दी हुई क्या क्या स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है। तो मुझे FCRA का मेरे पास में रजिस्ट्रेशन है, और उस पैसे का मैं किसी भी तरह का म्यूचुअल फंड और स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन under the amendment 2001, no foreign contribution can be transferred by the recipient of the any other. पहले क्या होता था? पहले मींस इस एक्ट मींस सितंबर से पहले, कि मैं अगर किसी कोई NGO को इंटरमीडिएटरी उसके थ्रू में पैसे को खर्च कर सकता था। नाउ द एक्ट चेंज, कि जो भी पैसा खर्च करना है NGO का, जो आपने FCRA का पार्टी पैसा लिया हुआ है, उस पैसे को आपको डायरेक्ट ही खर्च करना है, इंटरमीडिएटरी नॉट अलाउड एट प्रेजेंट। कैन एनी पर्सन सरेंडर द सर्टिफिकेट गारंटेड? ये पहले बड़ी प्रॉब्लम थी, यदि मैं वॉलंटरी अपना सर्टिफिकेट सरेंडर करना चाहता हूँ तो पहले ये ऑप्शन नहीं था। अब इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन हु वांट टू फॉरगो और फॉरक्लोज इट्स FCRA रजिस्ट्रेशन ड्यू टू द ओन रीजन may surrender the certificate by uploading the application in form number FC7 on your web portal. All the physical asset and unutilized foreign contribution bank of such person shall be disposed of in accordance with the law. जैसे हम देखते हैं कि मेरे पास में यदि कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन बचा है तो उस पैसे को मुझे या तो गवर्नमेंट को सरेंडर करना है, गवर्नमेंट को देना है, या मेरे पास में अगर डोनर है तो उस डोनर को
वापस करना है। ये इन्होंने एक लॉ में एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट दे रखा है कि उसी फॉर्मेट से मुझे मेथड दे रखा है, उसी मेथड से उस पैसे को मैं अनयूटिलाइज्ड पैसा मेरे पास में है तो मैं कैसे उसको यूटिलाइज करूंगा, उसी के हिसाब से मुझे उस पैसे को डिस्पोज ऑफ करते हुए फॉरेन कंट्रीब्यूशन का अमाउंट, अनयूटिलाइज्ड अमाउंट मेरे पास 0 हो जाएगा। देन वी कैन सरेंडर आवर FCRA रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी टू फाइल FC7। अब आते हैं इसमें पेनल्टी प्रोविजंस आते हैं जो बहुत है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि FCR का रजिस्ट्रेशन तभी हमें लेना चाहिए जब असेसी की तरफ से या क्लाइंट की तरफ से कुछ कंपलसरी हो। वैसी शौक में हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अब FCRA के रजिस्ट्रेशन को कंटिन्यू करना एक असेट जो है वो हमारी लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। यदि मेरा एक दिन भी एनुअल रिटर्न लेट हो गया तो एक दिन की भी पेनल्टी 1 लाख रुपए लगती है मिनिमम पेनल्टी, या अगर मेरा नील रिटर्न है मींस नील कंट्रीब्यूशन भी है तो भी पेनल्टी 1 लाख रुपए आएगी, इसमें कम नहीं होता। अब देखते हैं क्या क्या पेनल्टी FCRA के में। टू फॉर एक्सेप्टिंग एनी हॉस्पिटलिटी और कंट्रवेंशन सेक्शन 6 में 10,000 रुपए। फॉर ट्रांसफरिंग एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू एनी अदर पर्सन 1 लाख और एक लिमिट दी हुई है। फॉर एक्सेप्टिंग कंट्रीब्यूशन टू कंट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 11 1 लाख और 10%। लास्ट में आता नॉट फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ईच फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव 1 लाख or 5% of foreign contribution received during the period of non-submission, whichever is higher. तो FCRA में रजिस्ट्रेशन लेना वैसे तो अब आज की डेट में थोड़ा टफ भी हो गया है। एक 1.5 साल तक कोई रजिस्ट्रेशन अभी नहीं मिलता है। हम डायरेक्ट इनकम टैक्स की तरह ऐसा भी नहीं है कि हम डायरेक्ट वहां जाके अपने कंसर्न ऑफिसर से बात करें। इट इज नॉट पॉसिबल। ओनली बाई मेल के थ्रू ही हम उसको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। FCRA में जब हमने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ एक मेल ही डाल सकते हैं। जब तक हमारे पास में कोई लेटर नहीं आता हम वहाँ अटेंड ही नहीं कर सकते। इट इज नॉट, बिल्कुल उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है कि जब तक आपके पास में मेल नहीं आएगा, लेटर नहीं आएगा, उस लेटर में टाइम और डेजिग्नेटेड ऑफिसर का नाम भी लिखा होता है कि आपको इस टाइम पे उस ऑफिसर से मिलना है अपने रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तभी जा सकते हैं। वैसे हम वहाँ जा भी नहीं सकते। तो ये तो मेरा रहा। नाउ द क्वेश्चन आंसर सेशन। आई रिक्वेस्ट टू मिस्टर। Yes, sir. ठीक है जी। Yes, sir. Now, there are many questions which you have already covered. Still, I will ask them for clarity of the participants. Is FCRA applicable when receipts are received from resident or Indian citizen residing abroad to Indian trust? नहीं नहीं, इसमें जो मुझे FCRA के रजिस्ट्रेशन में जो भी मुझे रिटर्न फाइल करना है वो मुझे फॉरेन कंट्रीब्यूशन का करना है, इंडियन पर्सन का नहीं करना है। ओनली फॉर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव आई था, ओनली फॉरेन सोर्सेस। यदि मुझे कोई पैसा NRI से मिला हुआ है तो NRI से जो पैसा मिला है इट इज नॉट कवर अंडर FCRA। जो फॉरेन सोर्सेस से मुझे पैसा रिसीव हुआ है ओनली उसी की इंफॉर्मेशन में FC4 में दूंगा, अदरवाइज नहीं। What is to be done if FCRA registration is cancelled or expired? यस, FCRA का रजिस्ट्रेशन 2 तरह से कैंसिल होता है। यदि फर्स्ट मैंने कोई लॉ का वायलेशन किया हुआ है तो वो मुझे शोकोस नोटिस देंगे। शोकोस नोटिस के बाद में मैं अपनी सबमिशन फाइल करूंगा। यदि वो मेरी सबमिशन से सेटिस्फाइड है तो मेरा रजिस्ट्रेशन वो दोबारा रिस्टेट कर देंगे। यदि मैं अपनी सबमिशन से उन्हें सेटिस्फाइड नहीं कर पाता हूँ तो मेरा नंबर वो कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के 3 साल तक मैं दोबारा भी अप्लाई नहीं कर सकता। और जो मेरे पास में फॉरेन कंट्रीब्यूशन बचा हुआ है वी हैव टू ट्रांसफर टू गवर्नमेंट अथॉरिटी। Is opening of bank account at SBI main branch of New Delhi is mandatory for financial year 2021? The portal is not allowing to file annual return for financial year 2021 unless SBI account details are filled. Yes, क्योंकि इन्होंने जो डेडलाइन दिया हुआ था आपको SBI में अकाउंट खोलने का वो 31 मार्च दिया हुआ था। और जो FC4 हम फाइल करते हैं या करेंगे जो एनुअल रिटर्न में, उसमें उसको मेंशन करना पड़ेगा। यदि हमने उस फॉर्म में मेंशन नहीं किया हुआ है
तो मेरा FC4 भी नहीं जाएगा। हालांकि FC4 की अब इन्होंने डेट बढ़ा दी है, इस चीज का ध्यान है। मैं अभी अब 1 मिनट में आपसे इसमें ही डिस्कस करूंगा। इसका चेंज का अभी डेट आ गई है, एक इन्होंने नोटिफिकेशन दिया हुआ है अभी, ये भी हैव टू डिस्कस। ये अभी इन्होंने 31 मार्च 2022 को एक टाइम निकाला हुआ कि जिन FCR4 की जो रिटर्न है वो इन्होंने टाइम बढ़ाकर अब 30 जून कर दिया है विदाउट पेनल्टी। 30 जून तक, पहले ये 31 मार्च था। तो अभी प्रॉब्लम क्या थी कि 31 मार्च तक कुछ लोगों की बैलेंस शीट नहीं, सॉरी 31 दिसंबर इसमें डेट थी, तो 31 दिसंबर तक काफी लोगों की एनजीओ की बैलेंस शीट नहीं बन पाई थी, क्योंकि उसमें बैलेंस शीट भी लगानी पड़ती है। तो अब अल्टीमेटली जो डेट थी वो बढ़ाकर इन्होंने 30 जून कर दी है विदाउट लेट फीस। और ये जो नोटिफिकेशन आया है वो 31 मार्च 2022 को आया है। सर एक और क्वेश्चन ये भी था कि या जैसे 31 दिसंबर थी पहले और उन्होंने 31 मार्च को वो बढ़ा के 30/6 कर दी, तो अगर बीच में जनवरी से मार्च के बीच किसी ने फाइल किया विथ पेनल्टी, तो वो पेनल्टी रिफंड ले सकते हैं क्या? हाँ, वो पेनल्टी रिफंड हो जाएगी। आपको एक लेटर लिखना है FCRA को अपने लेटर हेड पर कि ये मैंने पेनल्टी जमा की हुई है और इस पेनल्टी को मुझे वापस किया जाए। आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल उनको सबमिट करेंगे, तो एक टाइम के बाद में वो पेनल्टी आपके वापस आ जाएगी आपके बैंक अकाउंट। तो एक सर 15 CB के रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि अगर आपने करंट अकाउंट में से $1 मिलियन ट्रांसफर कर रहे हैं तो बैंक वाले 15 CB कंपलसरी डिमांड कर रहे हैं, तो नहीं 15 CB, अगर 15 CB की इसमें नहीं है। 15 CB जब करते हैं जब हम बैंक अकाउंट से जब हम फॉरेन करेंसी का कोई पेमेंट हम ट्रांसफर करते हैं। इन माय ओपिनियन अगर एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में यदि हम पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, दोनों हमारे FC अकाउंट हैं, तो वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू 15 CB। What about NRI who have become citizen of foreign country? Can the fund transferred will be treated as foreign contribution? अगर कोई NRI है, NRI मींस एनी पर्सन हु होल्ड द इंडियन पासपोर्ट, और अगर इंडियन पासपोर्ट है और वो NRI है, अगर उससे कोई पैसा रिसीव होता है तो इट इज नॉट कवर अंडर FCRA। नॉन रेसिडेंट है, उसके बाद इंडियन पासपोर्ट नहीं है, मींस कोई पर्सन फॉरेन सिटीजन का है, नो डाउट फॉरेन सिटीजन का हो तो इंडियन पासपोर्ट नहीं होगा, उससे पैसा आ रहा है तो इट इज अंडर FCRA। Another question. As per FCRA Act, FCRA applications should be disbursed within 6 months. If it is not disbursed, what is the status of the application after 6 months? सर ये केवल किताबी बातें हैं, मींस केवल रिटन में है, लेकिन इसका एप्लीकेशन FCRA में नहीं होता है। मेरे पास में ऐसे है जिनको 1-1, 1.5 साल हो गया है, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं आया है। वी कांट डू, हम कुछ नहीं कर सकते, ओनली वेट के अलावा देयर इज नो सॉल्यूशन। वेट एंड वॉच देयर इज द ओनली सॉल्यूशन। हम इसको ये नहीं मान सकते कि मेरा रजिस्ट्रेशन आ गया या विद इन 6 मंथ का टाइम यदि एक्सपायर हो गया, तो और एक्ट में तो जैसे इनकम टैक्स में हम देखते हैं कि विद इन 6 मंथ पहले था कि विद इन 6 मंथ नहीं है तो आपको डीम्ड मान लिया जाएगा। यहाँ डीमिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। अगर आपके पास में रजिस्ट्रेशन अगर 8 महीने भी हो गए हैं और रजिस्ट्रेशन नहीं आया है तो डीमिंग प्रोविजन नहीं है। यू हैव टू वेट एंड वॉच, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। If corpus donation was received and appropriated to corpus, whether it can be treated as utilization? प्लीज रिपीट अगेन। या अगर कॉर्पस डोनेशन के लिए आया हो और हमने कॉर्पस के लिए यूटिलाइज किया हो, अप्रोप्रिएट किया हो, तो वो यूटिलाइजेशन में कंसीडर करेंगे? नहीं, इसमें कॉर्पस और नॉन कॉर्पस की डेफिनेशन नहीं होती। FCRA में कॉर्पस और नॉन कॉर्पस की डेफिनेशन नहीं होती। इसमें जो पैसा मिलता है वो प्रोजेक्ट वाइज ही मिलता है और उसको केवल प्रोजेक्ट में ही खर्च करना है, चाहे वो कैपिटल एसेट खरीद रहे हैं चाहे वो रेवेन्यू नेचर का, वो हार्डली मैटर।
कॉर्पस की जो डेफिनेशन होती है वो केवल डोमेस्टिक उसमें होती है, डोमेस्टिक डोनेशन। Please elaborate on administrative expenses. Whether salary paid, whether salary paid to teachers by education institute will be considered as admin expense. नो, एक्चुअल में इसमें एडमिन एक्सपेंसेस में जो आपको किसी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जो आप एडमिन में पैसा खर्च करते हैं उसमें डेफिनेशन दी हुई है। हालांकि जैसे कोई आपने रेंट दिया हुआ है किसी ऑफिस का, जो आपने अपना ऑफिस रखाया हुआ है, या आपका जो ऐसा स्टाफ जो एडमिन में काम आ रहा है, इस तरह के खर्चे एडमिन में आते हैं। आपने कोई टीचर को सैलरी दी हुई है और आप एजुकेशन एक्टिविटी में है, तो इट इज नॉट कवर अंडर एडमिन एक्सपेंसेस, ये आपका यूटिलाइजेशन माना जाएगा। Okay. Recently, there is delay in renewal of FCRA from the department. Renewal fee is paid, but certificate is not yet received. Can we accept and utilize the foreign contribution? अब इन्होंने क्या किया हुआ, अभी एक नोटिफिकेशन निकाला हुआ है कि यदि जिनके रिन्यूअल की इन्होंने डेट दे दी है, दी हुई है, उस डेट तक यदि नहीं आता है तो उस डेट के बाद वी कैन रिसीव। उन्होंने एक सर्कुलर निकाला हुआ इसमें, आप रिसीव कर सकते हैं। हाँ, मैं अभी आपको शेयर करके आपको दे दूँ। थैंक यू सर। If an FCRA registrar fail to renew or file its annual return, its registration will be cancelled. But will it also attract penalty even if no foreign contribution was received? Yes, क्योंकि आप देखिए कि FCRA का, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि FCR को मेंटेन रखना बड़ा टफ है। यदि आपने नील आपकी FCRA का कंट्रीब्यूशन भी है, then you have to file the annual return in FC4। यदि आपने फाइल नहीं किया हुआ तो 1 लाख की पेनल्टी है उसकी भी। और यदि आपने डिले हो गया है तो आप सबसे पहले कंडोन फाइल करें। कंडोन में कुछ पेनल्टी लगाते हैं, वो कंपाउंडिंग जिसको बोलते हैं। कंपाउंडिंग के बाद यदि वो कंटिन्यू करना चाहते हैं FCRA वाले, तो आपको कंटिन्यू हो सकता है। कैंसिल है तो देयर इज नो एनी अथॉरिटी भी नहीं है कि वहां जाके आप अपनी ग्रीवेंस कर सकते। कैंसिल मींस कैंसिल। Consequences of non-opening of SBI bank account. सर, SBI का यदि आपने अकाउंट नहीं खोला है तो आपको सबसे पहले तो FC4 फाइल नहीं होगा, मींस एनुअल रिटर्न नहीं फाइल होगा। एनुअल रिटर्न नहीं फाइल किया है तो 5% की पेनल्टी, 5% ऑफ 1 लाख व्हिचएवर इज मोर, आपकी पेनल्टी लग जाएगी 30 जून के बाद में। तो उसको तो इमीडिएट कराने लेना चाहिए, इमीडिएट, विदाउट एनी फर्दर डिले। उसके बिना यदि नहीं भी करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन 30 जून के बाद कैंसिल हो जाएगा। Sir, any good book to understand law and procedure for FCRA? जी, just repeat it, sir, please. Good book recommendation for FCRA? सर, FCRA के सबसे बेस्ट है, आप FCRA की जो साइट है fcraonline.nic.in, उस पर जाएं। उस पर सारी चीजें लिखी हुई है, ईच एंड एवरीथिंग। डू नॉट, जो मैंने अभी आपको बोला, क्वेश्चन आंसर सेशन भी है उसमें लगभग 30-35 पेज की काफी अच्छा राइटअप दे रखा है। तो इट इज मोर सफिशिएंट टू फॉर ऑल प्रैक्टिसिंग चार्ट CA। FCRA renewal application in form FC3A is filed late due to non-opening of SBI bank account. Whether NGO can utilize FCRA fund earlier received and kept utilizing the account? No. अब FCRA का, जैसे मैंने कहा था कि जो पैसा आएगा वो आपका SBI अकाउंट में आएगा, और SBI का उन्होंने टाइम लिमिट दे दी। उस टाइम के बाद में जो पैसा है वो आपको केवल SBI के बैंक अकाउंट में ही आएगा, दूसरी बैंक में नहीं आ सकता। अभी तक आपने SBI का बैंक अकाउंट नहीं खुलाया हुआ तो सबसे पहले SBI का बैंक अकाउंट आप खुलवा लें, पहली चीज है। दूसरा, ऑलरेडी आपका कोई बैंक अकाउंट है जिसमें FC फंड पड़ा हुआ है, आप उस पैसे को खर्च कर सकते हैं। देयर इज नो एनी बाउंडेशन। ऐसा भी नहीं है कि उस पैसे को आपको पहले SBI में ट्रांसफर करना है, इट इज ऑल्सो नॉट। उस पैसे को आप सेपरेट खर्च कर सकते हैं। जो आपका FCRA का जो पैसा SBI में आया है उसको सेपरेट खर्च कर सकते हैं।
A person living in Australia wants to donate some amount to Indian trust, whether the registration is compulsory. नहीं, अगर जो पर्सन इंडिया ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, इट इज एनआरआई पर्सन ना, इंडियन पर्सन, Yeah, person living in Australia. तो आने दो, क्या नो इशू, वो एफसीआर इट इज, वो जो आपका अगर इंडियन पर्सन ऑस्ट्रेलिया जा रहा है तो इंडियन पर्सन No sir, a person from Australia wants to donate. पर्सन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया कम टू इंडिया, नहीं, वहीं पे वो इंडिया इंटरेस्ट को डोनेट करना चाहते हैं. हाँ, तो एफसीआर के कवर में आएगा, डिस्कवर एफसीआर. जब तक आपके पास में एफसीआर का रजिस्ट्रेशन नहीं है, यू कांट रिसीव ए सिंगल पेनी फ्रॉम एफसी फंड. इस चीज पे ध्यान में रखना है कि जो मुझे एफसी फंड रिसीव हो रहा है, एफसी फंड मींस जो मुझे फॉरेन सोर्सेज से रिसीव हो रहा है, और फॉरेन सोर्सेज का फंड वो होता है जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर नहीं है, कोई फॉरेन सिटीजन है या फॉरेन एंटिटी है. मींस जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक लिस्ट दी हुई है कि विच इज फॉरेन एंटिटी, यदि उसी से मुझे पैसा रिसीव हो रहा है एज ए कंट्रीब्यूशन, तो मैं उससे पैसा तभी ले सकता हूं जब मेरे पास में एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन हो. एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो इट इज नॉट एडवाइजेबल टू रिसीव दिस काइंड ऑफ फंड. Otherwise, a lot of penalty and prosecution to be here. FCR number cancelled due to non-filing of return, as there was non-operative account. Can I apply for fresh registration? No, ऐसा नहीं है कि मेरे पास में एक पेंडिंग पड़ा हुआ है, मैं फ्रेश के लिए अप्लाई कर दूं, क्योंकि जब मैं अप्लाई करूंगा तो उसमें डिटेल आती है कि आपके प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, आपका कोई एफसीआर का रजिस्ट्रेशन पहले तो पेंडिंग तो नहीं पड़ा हुआ, या कोई विदहेल्ड तो नहीं पड़ा हुआ, या कोई कैंसिल तो नहीं हुआ, उसमें पूरी डिटेल आती है. यदि आप दोबारा अप्लाई करेंगे तो उसको वो एंटरटेन नहीं करेंगे जब तक पहला मैटर आपका डिस्पोज ऑफ ना हो जाए. If specific donation received for spending on a healthcare infrastructure by charitable trust, whether GST is applicable on such if spent on healthcare infrastructure. देखिए, जीएसटी का जो लगता है वो एक्टिविटी बेस्ड है, एक्टिविटी बेस्ड जीएसटी है. यदि मेरी एक्टिविटी जीएसटी के अंडर में है या मेरी कोई ऐसी एक्टिविटी जिसपे जीएसटी लगता है, अगर आप एनजीओ है फिर भी आप पे जीएसटी लगेगा. इट इज डिपेंड ऑन द एक्टिविटी. यदि मेरी जो एक्टिविटी है उस पर जीएसटी लगता है तो लगेगा, लेकिन मुझे किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं मिलेगा, मेरी एनजीओ है या एनपीओ है. If any donation is received by mistake, not reported in quarterly return, and is reported in return of subsequent quarter, what are consequences? Is revision of quarterly return allowed? यस, इसमें क्या है कि यदि आपने क्वार्टरली रिटर्न में कोई चीज छूट गई है और आपने एनुअल रिटर्न में कर दी है, यदि वो एफसीआरए की पकड़ में आ जाती है तो उस पर कंपाउंडिंग लगती है, लमसम पेनल्टी. वो पेनल्टी देके यू कैन, लेकिन आप ऐसे भी नहीं है कि अपनी तरफ से पेनल्टी दे. नॉट, पेनल्टी तभी देनी चाहिए जब एफसीआर की तरफ से कोई पेनल्टी आपको इम्पोज हुई है. यहाँ एफसीआर में ये लॉ नहीं है कि आप खुद ही स्यूमोटिव पेनल्टी डिपॉजिट करें, वो ऑप्शन नहीं है. Yes. Thank you, sir, for a wonderful session. And this is great question answer round. Many participants have asked many detailed questions. I would like to give a vote of thanks to CECL sir for a wonderful session on inspection, search and seizure under GST, and CA Ved Mittal sir for overview of Foreign Contribution Regulation Act 2010 and recent amendment. Thank you very much, sir. Both of you. We have a very great session. Thank you so much, all of you. Thank you so much.